Hello everyone. Today we are going to discuss about an interesting topic, that is glaucoma. Glaucoma is a condition that damages the eye's optic nerve and gets worse over time due to the increased buildup of pressure inside the eye, and that is known as the intraocular pressure. ये कंडीशन यूजुअली फैमिलीज़ में देखी जाती है जहाँ पे जेनेटिक हेरिडिटरी फैक्टर इज़ यूजुअली प्रेजेंट। द इंक्रीज जो इंट्राओकुलर प्रेशर होता है उसके कारण जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाती है और इसके रिज़ल्ट से आइदर विजन लॉस और कंप्लीट ब्लाइंडनेस लेटर ऑन डेवलप हो सकता है। नाउ द कॉजेज़ दैट आर results in glaucoma, इसमें first important cause है that the aqueous humor, which is the fluid that is present inside the eye, and it usually flows out of the eye through a mesh called the trabecular network. But when this trabecular network gets blocked due to any reason, or if there is excessive buildup or formation of this aqueous humor, then this causes increased intraocular pressure inside the eye, and that in turn results in glaucoma. Other causes that are present is usually it may occur secondary to any severe infection in the eye. कुछ cases में inflammatory conditions like severe inflammatory conditions जहाँ पे रहती हैं आइज़ की, उसमें ये develop हो सकता है। अगर सीवियर इंजरी या ब्लंट इंजरीज या केमिकल इंजरीज अगर आइस में किसी कारण से हो जाती हैं, दैन दैट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्लूकोमा लेटर ऑन। अगर पेशेंट ने किसी तरह की सर्जरी करवाई हुई है सच एज फॉर कैटरैक्ट और एनी अदर काइंड ऑफ आई सर्जरी, then in that condition secondary to that surgery the glaucoma can develop later on. Now, what are the risk factors that are responsible for the causation of glaucoma? So, people usually who are 40 years of age or above, or those who have family history of glaucoma, are usually seen to have or develop this condition. Then persons with nearsightedness or farsightedness, जिसे कि हम myopia और hypermyopia भी कहते हैं, या जिनमें पुअर विजन देखा जाता है, उन केसेस के अंदर भी पेशेंट की ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन देयर इज़ कंडीशन वेयर द पेशेंट्स हु टेक स्टेरॉइड ड्रग्स फॉर एनी ऑफ देयर मेडिकल कंडीशंस और फॉर प्रॉब्लम्स फॉर ब्लैडर कंट्रोल और फॉर सीजर्स, उन दोज ऑल्सो द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज मेडिसिन कैन कॉज ग्लूकोमा। देन पर्सनस जिनमें कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, हाई लेवल्स ऑफ शुगर या सिकल सेल एनीमिया, और इन केसेस ऑफ हार्ट डिजीज़ विद हाई ब्लड प्रेशर, इन दोज केसेस ऑल्सो दिस कंडीशन कैन रिजल्ट इन ग्लूकोमा. Now, what are the types of glaucoma? Usually it is seen that glaucoma is mainly classified into 3 to 4 types, but the two major types that are seen is the small angle or the open or wide angle glaucoma, and the other is the narrow angle or the closure glaucoma. Now the wide eyed or the open angle glaucoma में क्या होता है कि जो पेशेंट का जो स्ट्रेन होता है स्ट्रक्चर से, वो जो ड्रेनेज है आइस की थ्रू द ट्रेबिकुलर नेटवर्क वो फाइन रहता है, बट जो फ्लूइड है वो किसी कारण से वहाँ से प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता. सो ये कंडीशन यूजुअली नॉट दैट सीवियर, और ये विद टाइम टेक्स अबाउट मंथ्स और ईयर्स टू डेवलप ग्रेजुअली. जबकि जो सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्लूकोमा दैट इज़ द एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है और द नैरो एंगल ग्लूकोमा, इसके अंदर ये सीवियर फॉर्म ऑफ ग्लूकोमा है जिसे हम काला मोतिया भी कहते हैं, और इसके अंदर पेशेंट का जो फ्लूइड है वो ड्रेन होता है एज इट बिकम्स, बिकॉज द स्पेस जो बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया की है वो नैरो हो जाती है ड्यू टू दी एनी बिल्डअप ऑफ some substances in that, or due to any other reasons like medical conditions of diabetes, hypertension, और इसके कारण जो प्रेशर आई में वो इंक्रीज़ होने लग जाता है. और दोज पेशेंट्स जिनमें कि ऑल्सो जिनमें फार साइटेडनेस या कैटरेक्ट की कंडीशन दैट इज़ द क्लाउडिंग ऑफ द लेंस ऑफ द आई, उनमें भी ये कंडीशन ईज़िली डेवलप हो जाता है.
देन द थर्ड टाइप जो ग्लूकोमा का देखा जाता है वो है सेकेंडरी ग्लूकोमा, विच अकर्स एज अ सेकेंडरी फॉर्म टू कैटरेक्ट और डायबिटीज़। इसमें जो हैलोस हैं ड्यू टू इन्फ्लामेशन इनसाइड द आई और ब्राइट लाइट के कारण दोनों आइज अफेक्ट हो सकती हैं। देन फोर्थ टाइप इज़ द नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, इन विच द इंट्राओकुलर प्रेशर यूजली रिमेन्स नॉर्मल बट द पेशेंट may have blind spots in their vision or their optic nerve gets damaged even though the pressure remains normal inside the eye. This is rare condition and not seen in many patients. Then the fifth one is the pigmentary glaucoma, in which small bits of pigments from the iris they get into the aqueous humor fluid and they clog the drainage canals inside the eyes from where this aqueous humor flows, and that in turn results in blockage and increased intraocular pressure resulting in glaucoma. Now, what are the symptoms that are usually seen in patients who have glaucoma? जिन पेशेंट्स के अंदर ग्लूकोमा देखा जाता है उनमें यूजली उनको हेलो लाइट्स नज़र आती हैं. यूजली व्हेन दे आर लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट दे मे बी ऑफ वेरिंग कलर्स फ्रॉम ग्रीन, लाइट ब्लू, पिंक, different colors of halos they see around the lights. Like when they are looking at some light, they see these halos or circles of different colors around those lights. Then second जो है इसमें vision loss हो सकता है patient को, that can lead to blindness also. रेडनेस रहती है काफ़ी आँखों में, पेशेंट को प्रेशर महसूस रहता है आँखों में, ख़ास करके जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है इंट्राओकुलर तब उनको स्ट्रेन रहता है आँखों पे या हेडेक साथ में हो सकता है, जो कि जिस आइज़ में इफ़ेक्ट है उसके साइड वाली हेड पे उनको पेन रह सकता है. देन आइज़ जो हैं वो हेज़ी हो सकती हैं उनको देखने में, इसके कारण क्योंकि उनकी आइज़ की जो एकोमोडेशन है वो इफ़ेक्ट होती है तो पेशेंट को इसके कारण अपसेट स्टमक विद नोज़िया एंड वॉमिटिंग डेवलप हो सकता है. कुछ केसेस में पेशेंट को ब्लरिंग हो जाती है विजन की विद फॉगी विजन, और कुछ में पेशेंट की प्यूपल्स दे कम्प्लीटली गेट डायलेटेड. नाउ व्हाट आर द मेडिकेशंस और द ट्रीटमेंट एंड फॉर दिस ग्लूकोमा? Usually in allopathic system they give eye drops that are given to decrease the fluid formation, or it is used to given to lower the intraocular pressure. Second, इनमें oral medicines prescribed की जाती है such as beta blockers or carbonic hydrase inhibitors that also have a similar function to the eye drops. Then there is the third, that is surgery, and that is the laser surgery, which is the most recent forms that are being followed nowadays. और इसके अंदर जो different types of surgery है वो है माइक्रो इन्वेसिव सर्जरीज हो सकती हैं. इसमें ट्रेबिकुलोप्लास्टी होती है, दैट मीन्स जो ट्रेबिकुलर नेटवर्क है उसकी जो ड्रेनेज में ब्लॉकेज आई है उसको ओपन किया जाता है. देन इरिडियोटोमी होती है जिसके अंदर की एक टाइनी होल होता है आइरिस में विच लेट्स द फ्लूइड फ्लो मोर फ्रीली. नेक्स्ट जो पेशेंट में देखा जाता है माइक्रो सर्जरी में, दैट इज़ ट्रेबिकुलोलेक्टमी, जिसमें कि एक ट्यूब इम्प्लांट कर दी जाती है इन द ट्रेबिकुलर नेटवर्क सो दैट द फ्लूइड, द एक्वस फ्लूइड, it can easily flow through the tube and drain out properly. Then there is also minimal invasive glaucoma surgery that is performed in case of allopathic mode of treatment. Now let's talk about the homeopathic mode of treatment. In homeopathic mode of treatment, usually the patient is given the medicine based on their constitution. There are some eye drops that can help them with the side effects of the allergies that occur due to the eye drops that they use in allopathic medicines, because they also have their side effects like itching of the eyes, increased redness of the eyes, or excessive strain. For those, homeopathic medicines can be given as an adjunctant to help lower or decrease these symptoms of side effects from allopathic treatment. Then also in case of, although there is no permanent cure for this condition, but if the constitutional medicine is given according to the complete case taking of the patient, there are some very good medicines that can actually help and decrease the severe effects that may affect later on in the patient, such as blindness.
सो इसमें हम लोग जो मेडिसिन यूजली प्रिस्क्राइब करते हैं वो हैं जैसे कि फास्फोरस हो गई मेडिसिन। अगर पेशेंट में ज़्यादा वाटर का इम्बैलेंस है देन मेडिसिन लाइक नेट्रोम्यूर कैन बी हेल्पफुल। Then there are some other medicines such as phytolacam, then physostigma, which is a very good medicine for eye conditions. But if the symptoms match, only then that can be given. Then अगर patient में itching है, redness है eyes की, and if their constitution is, then some constitutional medicines like sulfur, gelsemium and causticum and some other medicines can be prescribed depending upon what the patient is suffering from and what their symptoms are. Now, regarding the regular management or the general management for the patients who are suffering from glaucoma, the first treatment thing that they need to realize is that they should have a regular exercise regime. That means that it is important that they maintain an active lifestyle, because that helps to increase the blood circulation to the nerves that are supplying the eye, and that in turn helps in improving the blood circulation of the eye. Secondly, they should eat a healthy diet that is high in antioxidants and nutrient-rich foods, especially the omega-3 fatty acid-rich foods such as fish, cod liver oil. They should take that every day. Then they should also include dark leafy vegetables in their food. Then there are some patients who have are chronic smokers, and in those cases also they should completely stop smoking, because the condition gets worsened with that. Then they should also limit the intake of coffee, caffeine, sodas, because that can increase the intraocular pressure in the eye. Especially coffee should be avoided in such cases. Also, the patient while sleeping should elevate their head so that it helps in natural drainage of the aqueous humor from the eye. So they should try to sleep in their back supine position with the head upward, facing upward, and with the pillow lightly raised. Also, they should not rub the eyes, because sometimes it can worsen the condition, because excessive rubbing can cause irritation in the cornea and the iris, and further cause itchiness and other symptoms, and that can in turn disturb the aqueous fluid in the eye and can result in worsening of the condition. And last and least, the problem that they should be very careful is that while they drive or they are driving a car or any vehicle, they should have someone with them, and they should avoid driving at night. And if they are driving, they should have the proper eyeglasses on, so that their vision is not affected while driving. So this was a short information about glaucoma, what are their causes, their risk factors, the types of glaucoma and their management, both allopathic and homeopathic management with the general management. So I hope you got some good information about this condition that is very prevalent in the older population nowadays. And if you like the video, please like and share, and have a great day. Thank you.